Vashishta, Professor Ashutosh Mohan, also our faculty members and students in today's panel discussion on the G20 theme, Vasudhaiva Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future. Geetharattan International Business School was established in the year 2004. GIBS is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and is approved by the All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for its management courses, and Bar Council of India for its law courses. The institute conducts programs of MBA, First and Second Shift, MBA International Business, BBA First and Second Shift, BBA LLB, and BA LLB. The institute is accredited as A grade by NAC and assessed as category A+ by Joint Assessment Committee of Government of Delhi and Guru Gobind Singh Indraprasth University. The institute has been rated grade A by Academic Audit Cell of GGSIP University consecutively from past 8 years. GIBS has also been rated number which is a part of G20 discussions. And as the name suggests, Vasudhaiva Kutum, one earth, one family, one future. We are together living as a family in this world. Today, no country can stay in isolation. This you can understand. And the best part is that our country and our Prime Minister is now leading this particular G20 summit, and we are seeing that many discussions are going on as far as G20 is concerned. India has been now in forefront, and we see that world is looking towards India, and we have to prove worthy of it. When we talk of proving worthy of it, whether it is our intellectual capital, whether it is our technology, whether it is our environment, whether it is our scientific development, whether it is our literature, whether it is our legal issues, everywhere we have to prove that we are proving as a leader. The idea of this particular panel discussion is that let's try to focus upon how we as a nation, when we talk of world being one family, how we look at this as a family, and whether as a head of this family for this particular year, how do we give direction to this G20? A G20 as a forum is comprising of almost all big countries, be it China, be it Russia, be it UK, be it South Africa. But India has been given the chance to lead this particular group of 20. Now, how do we go ahead? This is the point of discussion. And when we go ahead with this discussion, I would like to request the panelists members to talk on how sustainable finance can take place, what can be done in that. We would like to prove ourselves to the whole of the world, and how we prove our leadership to the world. For the reason, the world at present is looking towards India. When I say it's a small family, the world has become a small family. One thing which is peculiar to India as a nation is we greet with folded hands and we meet with open hands. This is what our culture has taught us. Understanding that this is the culture, we have China as one of our neighbors, we have Pakistan as one of our neighbors, we have these countries in G20. How do they look at our culture when we say we greet with folded hands and we meet with open hands? Are they with us, or they are just for the namesake? So without wasting much of the time, I would like to give the mic to the panel members, and let's start with this discussion. I'm sorry, sir. Dr. Mehjabin Banu, who is PhD in the area of international migration and ILO conventions. She has worked in India, Center for Migration, ICM, and under the Ministry of Overseas Indian Affairs, now a part of MEA. Prior to this, she held teaching position as an assistant professor and has also worked in corporate field in the field of human resources. She also possesses post-graduation in business management and master degree in labor management.
She has qualified UGC NET in management. Her research and consulting interests include international migration, ILO conventions, and refugee issues. Dr. Manu has also prepared papers in international conferences, published papers in report journals, chapters in edited books, and articles in magazines related to migration issues. She has also worked as a visiting fellow at Center for Vietnam Studies. Currently, she is associated with Vietnam International Business School. As an assistant professor, she has also done research project of BBC World London and recently worked with Wilder India publication for case studies writing, wrote 14 cases for strategic management book authored by Dyer for its upcoming 4th edition books. Now we move ahead and begin with the session. Yeah, may I also add that she knows good Chinese also. She can speak Mandarin and write Mandarin, but we forgot to add that. So please include that in her resume. It's a big project. Thank you very much, sir. And I'm really privileged to be here. I'm really honored to sit with the panelist as a moderator. Would like to do justice to the event. So starting with the customary little introduction first. G20 is an international leaders forum of 19 countries and the European Union. It includes all the countries of G7 and BRICS, beside also including some other countries. G20 agenda covers a wide range of global economic issues such as macroeconomic policies, international trade, financial stability, and development. The forum also addresses issues related to climate change, energy, environment, health, and anti-corruption. The countries which are included in this are Argentina, Brazil, Canada, China, France, Japan, India, Germany, Indonesia, Italy, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, and United States, and the European Union as a whole. So this time India is organizing G20, and its priority areas are green development, climate finance and life, accelerated inclusive and resilient growth, accelerating progress on sustainable development goals, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institutions for the 21st century, women-led development also. So to start with, we will have one question, we will have 2 rounds of questions, one question from each panel member. So, Dr. AK Vashishta, so since you have been associated with multilateral institutions in various capacities, we would request you to present your views on the mandate and future of multilateral institutions, as this is one of our key G20 priorities. Yeah, that's all? Yeah. Right. Thank you, Dr. Majid. Now, you all understood what is this question given to me? Should I repeat it? Right. You can just say in a few, just about the Okay. So we are I want everyone of us to actually understand what I am being asked. We are actually requesting sir to present his views on mandate and future of multilateral institutions, as this is one of our key G20 priorities. Yeah, multilateral institutions. There is, before I actually, yeah, mic is very bad. No, right? Okay, fine. आप सब लोग सुन सकते हैं मुझे last तक. I want everybody's participation, right? There's no purpose of us discussing only amongst each other क्योंकि हम लोग तो PhD करके आए हैं, you are here to do PhD. अब पढ़ चुके हैं सब चीजें. I'll tell you, ये जो G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लीडर बनाया गया है, he's representing each one of us. आप सबको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो. क्या नहीं जो लास्ट में बैठे हैं, मैं कह रहे नो योर नेम, आप में से कोई अपना नाम बता लीजिएगा प्लीज. सदाजी जी बता दीजिए व्हाट्स योर नेम. हाँ बताइए. नवनीत. Kavneet. Well, Kavneet, he's representing Kavneet, and somebody from there, please, from the last
Anybody? The faculty members बैठे हैं बता. Dr. Richa. So he's representing Dr. Richa, he's representing Kavi, he's representing Arun Vashisht, he's representing Dr. Shiv, he's representing everybody. We are saying G20, क्या हम G20 के साथ actually connected हैं? क्या हमें पता है? We are sleeping, we are waking up, we are reading, we are studying. And G20 is going on because there are some selected people, the Prime Minister, the Finance Minister and the Foreign Minister. These are three nodal personalities. सब देशों के हेड जाएंगे, वो इसको अटेंड करेंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं, उसका जो इफेक्ट होगा आपको पता लगेगा. मोबाइल यूज करना आप G5 यूज नहीं कर सकते, right? Certainly some of the pictures on your mobile, some of the features of your mobile will go. Then you just wonder, hey, ये क्या what है? I was downloading some lectures, I was accessing some, I was talking to my mother in the US or somebody, some friend in remote area of India. मेरी बात ही नहीं हो रही है. Then somebody said, in G20 they have taken a decision, this will not be done. Next, what is the G20? And who told them to remove this feature? We were so comfortable with this. Agree? Then you realize, oh, I wish I had known it. I would have told these people G20 में भाई ये नहीं करना. Right? So there is a big disconnect. आम आदमी को पता ही नहीं होता है दुनिया क्या फैसला ले रही है, देश में कौन क्या फैसला ले रहा है, ये आम आदमी तक जब तक पहुंचता है, उसके इफेक्ट्स पहुंचते हैं, तब तक बहुत दूर जा चुके होते हैं हम. वो क्रिस्टलाइज हो गया होता है, जो क्विक लाइन है, चूना जो है वो सनबर्न में बदल गया होता है. It is crystallized into marble and marble cannot be turned back to lime. How much ever you grind it. Now, G20, group of 20 nations. It started with G7 in 1999. 7 देश इकट्ठे उन्होंने कहा हम इकट्ठे रहेंगे. Bipolar world था, एक अमेरिकन ग्रुप था. ये तो सब लोग जानते हैं. We all know there was one American, सब लोग अमेरिका के साथ थे, कुछ लोग रशिया के साथ थे. अगर आप पिछले 2 विश्व युद्धों की बात करें तो भी आप एक एक्सिस फोर्सेस हैं और एक अलाइड फोर्सेस हैं, है ना. 2 ग्रुप हैं, 2 आपस में भिड़ते रहते हैं. भारत एक ग्रुप को अपनी सेना भेजता रहा, क्योंकि हम अंग्रेजों के नीचे रहे हैं तो हम उनको देते तो अलाइड कर सकते, तो हमें we didn't know which side to side with, but कुछ लोग एक ग्रुप के साथ हो गए, कुछ दूसरे के साथ हो गए. किसी के साथ सेना भेजी, किसी के साथ रशिया. So we actually didn't know which side to go. ये जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है कि दो आई कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, मैंने अपना डॉक्टरेट भी लॉ में किया है और आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे पहले सुना भी होगा नहीं. यहाँ पर मैनेजमेंट है वाले लोग बैठे हैं, राइट? व्हिच ईयर ऑफ मैनेजमेंट है? ऑल ऑफ देम. भाई आपसे बड़ी मुझे खुशी हो रही है बात करते हुए. आई मस्ट टेल यू because you know why, do you know what role you are going to play? क्या आपको पता है मैनेजमेंट करके आप क्या करेंगे? नहीं पता, आपको मालूम पड़ेगा. हो सकता है आप बाद में जाकर के बहुत बिजी हो जाएंगे अपनी कैरियर में. Still you will not come to know. But the man who is working under you, नीचे that small man who cleans the toilet, who cleans the floor, उसे पता चलेगा how good a manager you are. आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, कितने बुरे हैं, वो आपकी रिपोर्ट कार्ड लिखेगा. वो कितना खराब मैनेजर आया, देखो ना कितना अच्छा मैनेजर आया, हमारी जिंदगी संवार दी इसने. एक आपको G20 पर आते आते एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ. जीआरडी टाटा ने, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक नया रूप दिया था जमशेदजी टाटा जी के बाद. वो कैपिटलिस्टिक अप्रोच थी, उन्होंने उसको बदला जीआरडी टाटा ने. और मालूम है क्या स्लोगन दिया? अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए मुझसे. उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक छोटी सी उनकी पिक्चर्स के साथ. उसमें लिखा हुआ, कहीं पढ़ा था मैंने, लीडरशिप ऑफ कंसेंसस. लीडर एक होता है ना, बाकी सब फॉलो करते हैं. लीडर क्या होता है? फॉलो मी. हमारे, मैं तो फौजी रहा हूँ, किताब है पॉल न्यूमैन, एक मेजर जनरल अमेरिका, उन्होंने किताब लिखी है फॉलो मी. सारी दुनिया भर के सारे फौजी बिकॉज लीडर को ही फॉलो करते हैं. बट जीआरडी टाटा दैट टाइम व्हेन ही वाज यंग बॉय, 31-32 इयर्स, 31-32 साल की आयु में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को एक नया रूप दे दिया.
आज तक सस्टेन कर रहे हैं, जिसमें था लीडरशिप ऑफ कंसेंसस। यू हैव अ लीडरशिप जिसमें हर आदमी आपके साथ हो। यू हैव मैनेजमेंट ऑफ कंसेंसस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर बहुत अच्छी तरह से बताएंगे आपको। जब आप कंसेंसस के लीडरशिप से काम करते हैं तो आपकी अपोजिशन नहीं होगी, हर इंसान आपके साथ चलता है। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल। यू माइट हैव वॉच्ड दिस मूवी गुरु। इट्स अ वेरी गुड, देखिए ना आप फिर देखिएगा मेरी स्पीच में। इट गिव्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। मिस्टर धीरूभाई अंबानी, उन्होंने क्या किया? He followed this concept। उनकी तरक्की का एक कारण ही यही था कि रिलायंस के शेयर जो है वो आज इस लेवल पे है और विद इन अबाउट less than 6 months they went up और आज तक नीचे नहीं उतरे वो। He started this leadership of consensus, inclusive management। जिसने ये किया वो आज तक सफल है और आने वाले हजारों सालों तक सफल रहेगा, कायम रहेगा। जिसने ये नहीं किया वो टूट गया, बिखर गया। तो ये मैनेजमेंट के लेसन आपको बताओ। G20 इंडिया में आने के बाद यही माइंडसेट जो है वो G20 आहिस्ता आहिस्ता जो लोग नहीं इससे वाकिफ थे, they are now adopting this, they are following this pattern. What will we find? These gifts of nature are going. If you have to go out, you have to carry water from home. And जो घर का पानी है, that water has to be brought from an RO. दरियाओं का पानी, यमुना जी का पानी, गंगा जी का पानी, व्यास सतलज का पानी कहां से ला करके यहां पहुंचाते हैं, बट यू स्टिल कैन ड्रिंक इट। क्यों? पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूट कर दिया है, एनवायरनमेंट खराब हो गया है। सो दिस इज वन इशू व्हिच द कंट्रीज, द होल वर्ल्ड ओवर, सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोगों ने इसे महसूस किया था, बिकॉज दोज पीपल वर नॉट यूज्ड टू हॉट एनवायरनमेंट। Norway, Holland, Sweden. During our college days, we used to see those magazines or some TV and the internet नहीं होता था. We used to watch it in India. They started it during our presence. There was no day-to-day magazine. We used to read the Time, Newsweek, Illustrated Weekly. उसमें photographs छपते थे. Lot of agitations in Scandinavia, Scandinavian countries. वो हड़ताल करते थे, कुछ मार्च कर देते थे. क्यों? एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। So we used to wonder what is this. We didn't realize because we were a very safe and beautiful country, right? अब हमें पता चल रहा है क्योंकि वो they were not used to this warm environment. उनकी बर्फ पिघल रही थी. They were not used to that environment. आज हमारी भी वही हालत हो रही है। When this started spreading धीरे-धीरे बुसान में समिट हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, रियो डी जेनेरियो में हो गया। Then they sat and put their heads together what to do. Nothing is stopping. There was some term which I don't know, आप लोगों ने नहीं सुनी लेकिन हमने aerosols. Right? There's a release of hydrocarbons and aerosols into the air when the refrigerators, thermostats and these things are made, manufactured. And they go and they deplete the ozone layer. उसमें check करते हैं जैसे इसी का अगर वो सच्चे ना, अरे हो गया तो हो गया, हम क्या करें? होने दो? नहीं। अगर होने दिया तो जो सूर्य भगवान ऊपर बैठे हैं उनकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो यहां से आएंगी, इधर से निकल जाएंगी और अंदर की सारी सेल्स को खत्म कर देंगी। Suddenly people started suffering skin diseases, कैंसर के पेशेंट्स बढ़ने लगे। Right? जिस आदमी को ये बीमारी नहीं हुई है, जिसके आस पड़ोस बीमारी के घर में नहीं, वो नहीं जानता इस बीमारी को। Right? So all these things, when all these things started spreading in this world, people started forming associations and groups, and then Group 20 also came into being. अभी डॉक्टर साहब ने महाजबी ने पढ़ी ये कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी उसके मेंबर नहीं है पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन पूरी है, बिकॉज़ दे आर द बिगेस्ट सफरर्स। उनकी सारी जिंदगी वाटर के ऊपर है, जो सी बीच है उसके ऊपर ना। कंसेप्ट है कि हम इसे कायम कैसे रखें, सस्टेनेबल
ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ गोल्स किस तरह से हम कायम रखें और इंडिया को क्या गोल रखना चाहिए, व्हाट गोल शुड इंडिया हैव व्हिच इट कैन स्प्रेड टू द वर्ल्ड. वी हैव ऑलरेडी डन इट, योगा डे बनवा दिया हमने बिकॉज वी फॉलोड योगा. हेल्थ, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, ह्यूमन रेस खत्म हो रही है, वायलेंस बढ़ रही है दुनिया में. वी आर रिएक्टिंग, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वी आर नॉट टॉलरेटिंग ईच अदर. वी से वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है. बहुत अच्छी बात है. आपको एक बात छोटी सी बताऊंगा. वसुधैव कुटुंबकम started from one concept which was propounded by, which is attributed to Lord Krishna. उन्होंने उद्धव को ये कहा था, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वसुधा. 5 भूतों से बनी है सारी दुनिया भाई उद्धव. The whole world is composed of 5 elements. और हम सब जानते हैं earth, air, fire, etc. And they are all saying वस्तुतः समानेषु च, हर चीज में, whether it's a seaweed or it's a human being or it's an elephant or a water horse or whatever. Sir, this is a humble request to keep it short. Too short, okay, fine. Well, अब देखिए ग्रुप 20 है, मैं तो एक देश के बारे में भी नहीं बोल पाया, क्या ही नहीं है. I'll keep it short, I'll bring it. The only message, the sustainable development growth is that we stay alert. We move out in the sun and we feel the heat, so when we feel the heat, we'll start thinking that there should be shade, we'll plant more trees. We'll protect the environment just by saying, reading, writing books and giving lectures and discussion will not help. इसलिए मैंने आपसे कहा, managers हैं, you guys are going to make a difference. आप एक ambassador है of humanity, not we say this. We are all composed of the same elements. Vasudhaiva Kutumbakam क्या है? You are connected with the person at the farthest corner of this world. उससे साथ जुड़े हुए हैं, right? Just I saw by saying, a few months back I interacted with the diplomats from 45 countries. They were about to become ambassadors and I was about to interact with them on certain point. Do you know what did they tell me? The deputy ambassadors of those countries in Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, they said, please convey our thanks to Mr. Modi. We convey it through you. Because we were dying because of Corona and it was, and you know where? Georgia, Venezuela. वो कह रहे हैं हमारे पास आपके इंजेक्शन आए, वो लगे तो हम जिंदा हैं. Please convey our thanks to प्रधानमंत्री मोदी. Right? Okay, thank you very much. I think my time is up. So my speech is finished. Sir has been explained that the future of multilateral, sir has explained that the focus of developing countries should be towards protecting the environment, and this should be the key issue for this G20 summit. Now, my next question is to Dr. Ashutosh. Sir, given your expertise also in the domain of working with multilateral institutions, do you think that there is a need for reforms in multilateral institutions, especially in terms of making them more robust and resilient? आवाज आ रही है आपको सब? तो मेरी बड़ी humble request to all of you, please shut down your mobile phones. Otherwise, I'm not interested in talking to anyone. I don't need classes either in the universities. And I can make out all of you are looking at mobile phones and then clapping later on. You don't know what he said. I know perfectly well. So can you? Is it possible for you to, for maybe half an hour, coming 1 hour, to get rid of your mobiles? All of you have a mobile there, looking at it. If you can do that, then let us go ahead. Otherwise, we are doomed. Not even as students, not even as a nation, but as a total humanity in this world. There is a huge carbon footprint of this thing. You're on track. Small rickshaw wala jiska 100 रुपए भी नहीं कमाता है,
वो मैं 50 रुपये इसमें लगाता हूँ. Nobody is tackling it. We are very happy. और क्योंकि हमारी जी हमारे सबसे बढ़िया पैसा कमाते हैं, पंजाबी थानू समझ आती होगी. और कोई भी जीव है पहले खरीदे थे, आदत डाल दो, उसके बाद सारे करो. तो अगर आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप वेरी क्रूड, मैं वैसे ही बड़ा बदनाम हूँ, आप सब मूर्ख हैं अगर इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आप करिए. इसका मतलब आप खुद सोच ही नहीं सकते हैं. You don't have a, you're not human beings, because the only difference between you and animals is that you can think. You have cognizance. आप ऐसे बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश मिजाज इंसान हूँ, लेकिन मैं तो गुस्सा नहीं होता. तो जो कर सकते हैं वो कर दीजिए, बाकी डिगी डोना में बड़ी अच्छी चीज होती है. मुझे अब लाया तो an old professor used to say that I have to sing for my supper, I will sing for my supper, and so on. One thing is certain, I don't know anything about this, the business thing, etc. One thing I have full conviction and faith in is that a country which is dependent only on service sector is doomed. Whatever growth you think that the country is having, and if you think at all you are needed as managers, you don't need for shit. We are all parasites. On whom? You're all parasites on the laborer who's making roads. You're all parasites on those people who are making these huge buildings. More importantly, you're parasites on that farmer who has to irrigate the land with his own blood. If you don't think like this, man, you are doomed and you are cowards. टोपी उतार ले अपनी काका हंसी बाद छाके बाहर जा सकता है, ज़्यादा स्मार्ट होने की लोड़ नहीं. टोपी उतार के बैठते हैं, पूरा फौजी बैठा बताओ तेरे. When you sit in a room, if you don't have this much of courtesy, you are a fool of the first order. Remove your crap, please. You cannot, you can leave the room. It is as simple as this. It's a basic courtesy. If you're sitting in a room, you're supposed to remove your cap. What some problem is this? Huh? We've got some problem is this. I can't remove it. That you have to remove your cap in front of Even if I don't have dinner, I don't mind. I'll just sit. You should be proud of your body, whatever it is. Hardly matters. But the human courtesy, you're a smart boy. You're looking better than without the cap, let me tell you. You can take the opinion later on with other people whom you're more interested in. But as a father, I can tell you that you're looking better. Man, don't take it too hard, boy. What's your name? Joshua? Gar. Great name. Don't take it too hard, right? Sure. No, I'm taking it out. बच्चों को कहना चाहिए, मैं तो बिठाई होती थी, आपकी बिठाई होती तो ह्यूमन राइट्स रहते हैं. मैं तो बड़ी बिठाई का ही है. As a young assistant professor, पंचर लग गए, वापस नहीं जाना है. मेरा पहला काम था, हाथ लहू लुहान, बुरा हाल हो गया. तब मेरे को समझ में आया कि जो ethics of labor, अगर आप अपने हाथ से कुछ करके नहीं देख सकते, तो you have no right to sit somewhere and manage certain people or a workforce. If you can't hold a wrench in your own hand, if you don't know how, that indicates. आधों को तो ये नहीं पता होता गेहूं कैसे लग रहा है, गंदम गेहूं कहते हैं, गंदम भी नहीं पता होगा आपको गंदम क्या होता है. वो कहते हैं जी पेड़ पे लग रहा है. मैं पूछा पहली बार तुमने पेड़ पे लग रहा है गेहूं. बहुत कमाल की चीज है देखो. So they are asking for my opinion. G20, you can put it aside and flush it in a toilet. I'm not saying the leadership, but I'm talking about the G20, the whole thing. Nobody is bothered. हमारे देश की बेटी जो जड़ा ना कर दी या देश आप कहते हैं इक्विटेबल होना चाहिए. Somebody has messed up with their life and the person is out. Whereas we have got a CRPC 356, Brij Bhushan Singh. Are you ashamed? Aren't you? I am. The statement has already been given in front of the magistrate, not even otherwise.
which is a legal provision. Legal हो गया जी वो statement. Court of law में admit होगा 164 में हो गया. और then बाद में घूम रहा बाहर. Can you believe the kind of statement he is giving? He says, how can I do it? Do I eat shilati ki roti roz? Where is our leadership of which we are so proud of? Does this kind of thing happens anywhere else in the world? And that too, if somebody has committed this kind of crime, but thereafter even Mr. Trump the Julfi, they're after him now. He must have been indicted. And I'm very happy that the people who used to call themselves a democratic and intellectual leading light of the world, they have also degraded. And there is a decadence set in. हमसे ज़्यादा बुरी हालत है यूएस में, जहाँ जाने का ड्रीम करते लोग हैं। और ये ज़्यादा उसको क्या सुबह बहुत ज़्यादा है। आधे लोग हम ही दे रहे हिंदुस्तान में, यहाँ भी ट्रम्प आता है गुड़गांव में खरीद रहे सारे लोग। They want to be like Trump. आप बोले कि लोग उसको $10,000 दे के एक स्नाइप ले लेंगे उसके साथ। इंडिया में मिल जाएंगे बहुत सारे। There's so much money. But I think there are a few things everybody is talking about, you will come to know about it, and the way we are projecting certain aspects. Somebody sent me a video clip of the finance secretary, chief finance secretary of Tamil Nadu. You better hear his story also about G20. I don't know whether you have seen it or not. You better look at it. And this is not the first time that we have become the leader of G20. Who's bothered? We were there earlier also. पहले भी हो चुका है, ठीक है? What to do? So I think today, let's forget about your G20. So fact of the matter is, we as a nation of beautiful, dedicated people who have suffered for such a long time a colonial rule and still work hard. We are the ones on whose labor most of the Europe, not only we African countries in the subcontinent, most of the Europe is reaping the benefits. If you don't know, London used to be a running city of sewage. So much so that once the sewage overflowed because there was some water rising in the Thames, in the parliament, they had to shut the parliament for 15 days. It was stinking because of the human shit. It is because of our money which is sucked up. They are enjoying the benefits, they are clean cities. Why can't we work still even better? Why should we choose? Because you are asking only about the resilient economy. Raghuram Rajan also said the same thing, if you want to listen to him. He had to run away because nobody is there to listen to that kind of a guy. And somebody whom we have turned, I'm not a Congress guy, let me tell you. I'm total papu. Again, I just want to make you laugh. The problem is, he's a well-educated man. He has done his degree on development studies from Cambridge. He can sit with Raghuram Rajan and talk to him for more than 1 hour. There may be one other, maybe or two other people in our parliament today who can sit with that kind of a man with that human. And we label him as a papu. Let him be, as a politician, he may be a papu. But nice ways, still unmarried, again you can laugh. No, you don't want to? Sometimes you don't even understand the joke. Good. Good for you. What I am trying to emphasize, that when you have to introspect, you have to look at your strengths. We have come out of the kind of deep depression which was there in US and Europe because of the resilience of what? Because of the resilience of our agriculture sector. Because of the resilience of our public sector enterprises, where people still work very hard. And then it all started with the opening up, the globalization kind of a crap, you know. And I've heard, I don't know whether you it is very rare. I heard Stiglitz live in Udaipur, he was there. And he regretted, a major economist who supported the opening up of the trade and globalization,
post-capitalism and the way the capital was moving towards merely trade, managerial skills and service sector, he regretted that the world is going to turn on its own head one day. And this is what has happened. You know, US is a closed economy. You think it is open? No, it is closed. You don't give certain kind of what is that? Commission or something for the Harley Davidson, they will close shop. There, you just cannot enter just like this in US. No. Can you emigrate? Talking of Vasudhaiva, anybody can come from US, can come and stay here. You'll be most welcome. They roam around and they stay illegally also, most of them. Although they are not interested, but most of them they come and they stay here. Yeah, I'll just find out. What I'm saying is that you cannot go and settle there. You cannot go and settle in UK. And then comes the prospects. It doesn't matter what debate pros and cons. Otherwise, I could have said very good things about T20 also. Look at your human happiness index and human rights index, where you stand. Freedom of press index, where you stand. And after COVID, particularly your production sector, there is a recession looming large. Can we paint the recession? Can we camouflage it with the multicolored flags of nations and the painted streets? What my brother who irrigates the land, and sisters also, जो हमारे यहाँ खेती का काम जड़ा करते हैं, उधर एक 70% काम जड़ी औरत कर दी है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी पता कर ले कि साथ के सानी खाली मर्द की नहीं होती, वो औरत की ज्यादा होती है, वो सारे काम करती है। तो और कुछ ग्रोथ सोसाइटी में तो सारे उसको ही बेचारी को करने पड़ते हैं। बड़ी बात है, अगर हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, we are doomed. In the name of image, उसको theoretically simulacra बोलते हैं, simulated images जो होती हैं, जो आपको WhatsApp पे, टेलीविजन पे दिखाई देती हैं, जो मूव करती हैं बहुत जल्दी, simulated, simulacra कहलाती है वो. I don't know, you should read the theory of simulacra also. उसके थ्रू आपको बेफर्डी कर देना है young mind को. You are entrapped. You are only bothered about. I will cover the next section if given the chance, maybe in the next session. My take is that the only resilient growth and a sustainable growth we can maintain if we really start investing in our production sector. More importantly, in agriculture, in production, maybe in private, because now it has become a compulsion. We used to have beautiful public sector enterprises, which the government earlier, I'm not blaming any government, they have as a class decided this. I was in Udaipur, they sold off Hindustan Zinc Limited, a public sector company, blue chip diamond company, for 500 crores to Vedanta. You know, management students, and you must be knowing. And can you believe who was the disinvestment minister at that time? The most honest, the sacrosanct Shuriza. He was the disinvestment minister at that time when they sold it. Can you believe within a week's time, Vedanta Agrawal started taking it over, sold crap for more than 500 crores. This is what happens to us. The NPA at a running rate is more than 125 lakh crore. नाथ साहब ने जब इन्होंने घर खरीदा तो मुझसे कंसल्ट किया था, दिल्ली में फ्लैट लेना था, इनको गरीब आदमी जैसे मैं भी गरीब हूँ कि सर मैं क्या करूँ, मैं कहा कि बैंक से लोन ले लो 2 मिनट और में, तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहा ज्यादा ले लो, कहता कैसे लूँ, वो देंगे नहीं, मैंने कहा नहीं ले लेंगे, तुम ला के ले लो, कहता नहीं होगा, मैंने कहा तो इतने आप तो मैनेजमेंट देखते हो, सारा डायरेक्टर हो, उनको भी समझा देना इसी तरह से। उन्होंने बहुत कोशिश की, बेचारों ने 60 लाख का लोन दिया था,
सरकार से, किसी बैंक से या प्राइवेट से लिया था शायद आपने उस समय, सिविल आ रहा है, सही बात कह रहा हूँ तो इन्होंने HDFC से लिया था, 60 लाख का लोन लिया, बेचारे गरीब आदमी, जब तक लोन इनका चुका तो ये 130 लाख मतलब 1 करोड़ से ऊपर पैसा दे चुके थे। बाद में दूसरी सरकार आ गई, इनका जो घर था उसके रेट और गिर गए। हम दोनों ने इकट्ठे सोचा चलो दोनों इकट्ठे सुसाइड कर लेते हैं। Message sir has covered that India will become resilient only when they will be focusing on skill development. They will be focusing on women-led development. And he has well given example of developed countries how they have become resilient. Resilient means, what resilient means? Resilient means in a very difficult situation your economy is not going to collapse. Financial independence, he want to say that. Because in our neighboring countries there are financial crises which they are facing. Okay, so people are taking loan and enjoying the things which they will never enjoy by the means of their salary. So basically, sir, ने बहुत ही lighter mode पे G20 के priority areas को cover कर दिया है, वो उस तरीके से जिस तरीके से आपको समझाया जा सकता है, वो सारे priority areas cover कर दिए हैं। Maybe on a very serious note, अगर मैं आपको उसी तरीके से बताती तो आप शायद मोबाइल में ही रहते। Okay, so this is the time to really wake up. जब G20 यहीं पे ही हो रहा है, you should know कि what is happening on a daily basis. There are events happening all across the India. Daily basis पे government करा रही है events. There are United Nations, university lecture programs are going on. This is all to develop our youth's knowledge, because for India, youth is power, because we have the highest number of youth generation all across the world in terms of world, we say. Okay, so sir, going to a very in-depth questions of businesses which they will also not like to listen. I would like to ask Dr. AK Vashishta, can we talk on very oftenly we say that United Nations कुछ कर नहीं रही है, इतना सब कुछ हो गया वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन लिबरल लॉज के वायलेशन हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज नॉट वर्किंग ऑन दैट, बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज फेलिंग टू कंट्रोल दैट, व्हाट यूनाइटेड नेशन इज एक्चुअली डूइंग। सो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम भी लोग, कम से कम इस तरीके से ना हो कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेलियर, या कैन वी डू समथिंग इन दिस G20? Can we come up with some agenda to strengthen it? Yes, you see, G20 और United Nations के origin के reasons अलग-अलग हैं। United Nations इसलिए बना because League of Nations fail हो गया था First World War के बाद, right? And the humanity in general was scared of battles and war. इतने युद्ध हो चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी मास डिस्ट्रक्शन एंड मास हुई थी, ह्यूमैनिटी को खत्म किया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं दिए गए, मिसयूज ऑफ पावर अथॉरिटी इतना ज़्यादा हो गया that the first priority for the United Nations was to prevent war, destruction. G20 came up with a different purpose altogether. United Nations actually created a ground. We can't say that it failed. आज कितने members are there? 196 countries who are member of the United Nations, out of 200 something. So it means most of the world is a part of the United Nations. Yes, G20 we started at G7. 7 देशों से शुरू होकर के today we have 2/3 of the world's population as a part of G20. It's a group of 20 nations, not 20 nations. 19 nations and one union, that is European Union, pura Europe. Right? So 2/3 of the world is a part of Group 20, of course. I, for one, as a student of political science, would not like, or as a student of economics, would not like the United Nations to be replaced by G20. I would like both of them to operate parallelly. G20 के parameters, उसके goals, उसके objectives बिल्कुल भिन्न हैं, different हैं. United Nations के goal क्या है? Establish peace in the world. That's the main objective.
अगर आप देखें तो उसमें ऑलिव का वो ब्रांच बना हुआ है और ब्लू कलर है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यूनिसेफ है, चिल्ड्रन को बचाइए, एजुकेशन है, उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, UNDHR है, डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, ये एंसिलरी है टू द राइट कमीशन, सप्लीमेंट्री है। ग्रुप 20 के ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जहां लड़ाई होती है, सेंड योर फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज, कंट्रोल देम, एस्टैब्लिश पीस। वंस यूनाइटेड नेशंस क्रिएट्स अ बेड, एज डॉक्टर शिव ने बहुत अशोच ने बहुत अच्छे किसान का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है, राइट? खाना जो तैयार करता है पहले उसके लिए जमीन तैयार करते हैं, यूनाइटेड नेशन जमीन बनाता है, ग्रुप 20 उसके ऊपर ऑपरेट करता है। यूनाइटेड नेशंस किसको कैसे बेहतर बनाए, वी डोंट हैव टू मेक यूनाइटेड नेशंस बेहतर, वो कर रहा है अपना काम, जितनी उसकी काबिलियत है। बट प्रॉब्लम क्या है, यूनाइटेड नेशन के पास सैंक्शंस की पावर नहीं है। IMF अलग है जिसके पास, वर्ल्ड बैंक अलग है, वो यूनाइटेड नेशंस के नीचे नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कुछ बोलता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और ही कर देता है। एंड यूनाइटेड नेशंस इज डोमिनेटेड बाय व्हाट? 5 कंट्रीज ने बनाया था, 5 परमानेंट मेंबर्स। इंडिया आज तक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन पाया। पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आधारित है। ग्रुप 20 पॉलिटिक्स के ऊपर है। ग्रुप 20 सस्टेनेंस के ऊपर है कि क्या हम लोग बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, क्या ये प्लेनेट रहेगा, will there be planet called Earth or will have to all migrate to moon or somewhere or will be all finished? जैसे मायो सभ्यता की समाप्त हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सब खत्म हो गए थे, क्या हम भी उसी प्रकार से समाप्त हो जाएंगे? ये डर लोगों के बीच में आ गया। हमारा एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है, पानी कम हो रहा है, वेजिटेशन कम हो रही है, एनिमल्स कम हो रहे हैं, फूड कम हो रहा है, तो क्या हम लोग जिएंगे कैसे? दैट इज द फर्स्ट objective of this, to protect the humanity, to keep it together, then grow. So yes, by pursuing the 17 objectives, I think ये 17 objectives they cover everything. Poverty, and let me tell you one more thing. हम सबसे बड़े खुशकिस्मत हैं। आप अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, आर्टिकल 35 of the Constitution, all of them are there. Group 20 तो अभी बना, Constitution तो 1949 में तैयार हो गए थे 26 नवंबर को, है ना? और 26 जनवरी 21 नवंबर को, 26 जनवरी को वो इम्प्लीमेंट हो गया 1950 में। हमने तो कभी से डाल दिया था डायरेक्टिव में। वी आर कॉन्शियस, दैट इज व्हाई वी आर लीडिंग टुडे एंड वी विल कीप लीडिंग द वर्ल्ड। सो यूनाइटेड नेशंस स्टेज एंड ग्रुप 20 also stays, right? And we grow together. So that is how I look at it. And we prosper, we eat well, we sleep well, and we fight less. Come here, come here. Thank you, Dr. We would like to know. Thank you, Dr. Vashishta. My next question is to Dr. Ashutosh Mohan. We would like to know your view on another key issue on agenda, that is about maintaining accelerated and inclusive resilient growth. So, sir, what is at stake? What is at stake, and what possible potential do we foresee for maintaining inclusive and resilient growth? What is at stake, and what is the potential possibilities for maintaining this resilient growth? I'm a little confused because the only problem was that in this case, the question paper was out yesterday. She had already sent me the question, so I don't know how I prepare. But usually I don't look at WhatsApp or whatever. But I think I was tackling that earlier without you asking me. So usually आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा होता है। मैंने अभी ये जो कंपलसरी है वो मैंने पहले कर दी, मेरे को ज्यादा आता था। पहला कौन सा था आपका? अब वही मैं कह रहा है ना, हाँ जी, Resilience and robustness. That was the first question. Oh, you are trying to talk in language. Oh. Well, she knows she is an exponent of Chinese Mandarin, and it is one of the most difficult languages. ये ग्राफिक होता है, images बहुत अच्छे हैं, बड़ी मुश्किल है। मेरे को तो कोई कहे तो भी ना मैं चिंचा करा। लेकिन आप इंडिया में क्यों? आप चाइना जाओ। लेकिन आप बहुत पैसे
My answer would be कि दुश्मन से दुश्मनी निभाने के लिए भी उसको जानना जरूरी है। ये तो शराना सवाल है। दुश्मनी ने यदि जो गाल की है, if you think that any country in the world can survive without China, you are sadly mistaken. Because even during COVID times, the swords were coming from China. You can stop a few toys, but if you are using Mac Shack, वो अब बनने लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उन्होंने थोड़ा तंग कर दिया उनको वहाँ। ये तो जितने आप लैपटॉप, जितने फोन जो चला रहे हो, सब चाइना से बने हैं। बंद कर दो, फिर हमारी क्या होगा? भाई आप देखो ना कहाँ से लाएंगे टर्नल इकोनॉमी? मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो कैबिनेट है या हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सबके पास चाइनीज ही फोन होंगे। गाल जितनी बड़ी तुसी कटो, अमेरिका के विच भी यही है, यूरोप के विच भी यही है। And why? Look at China. They have done this robust growth. They produce things and they produce it at a very cheap rate. And if you think it is not possible, you have to look in your neighborhood. नहीं, इमरान खान के वहाँ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। इस तरफ मत देखिए, आप थोड़ा सा इस तरफ देखिए। Bangladesh has got a better economic growth rate. In human rights index also they are better than India. Happiness index they are better than India. जितना त्रिचुर में, जितना साउथ में कॉटन का काम होता था, बड़े बड़े ब्रांड्स, all of them, वो वहाँ कॉर्पोरेट फालतू का शोर को जाके बंद करा देते हैं, प्रोडक्शन रुक जाती है, तो have shifted their base to Bangladesh. You can go on saying that they have got Islamist fundamentalism, this and that, man, the ladies and everybody else is working. और ये तू ज़्यादा पता है, तू बांग्लादेशी है। मैं बांग्लादेशी होना रिपोर्ट देने में Dr. Ashutosh, when you are talking about Bangladesh economy, we can also not forget the economy of. Heard of the opium wars and everything? I can give you tales and tales. What the British did. यहाँ से इंडिया से ओपियम जाती थी, एक टाटा साहब की आपने बात की है, ये सारे अफीम का धंधा करते थे, जिन्हें पारसी, ठीक है जी, ये अफीम के धंधे में थे सारे। इन्होंने अफीम बेच के उसकी तिजारत कर करके पूरी जो बॉम्बे सिटी है, यू कैन राइट डाउन अ बुक, ओपियम सिटी, जो बॉम्बे शहर है वो अफीम की तिजारत करके बना है। शाहरुख खान से नहीं बना है, अमिताभ बच्चन से नहीं बना है, फॉरगेट अबाउट इट, नो टाटा, नो बिरला, नथिंग, वो इट वाज कॉल्ड ओपियम सिटी, वहां से ट्रेड होता था। एक जगह की बनी हुई ओपियम बॉम्बे से जाती थी, दूसरी जगह की बनी हुई ओपियम कलकत्ता से शिफ्ट होती थी। उसके शिपिंग के अंदर सारे पारसी मैग्नेट्स इन्वॉल्व थे, दे मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग, सो मच सो चाइनीज सरकार को बैन करना पड़ा शंघाई में एंट्री ओपियम की। ओपियम वॉर हुई है उसके बाद, दे गेट द राइट टू सेल इट, नशा बेच रहे हैं। अब कहते हैं नार्कोटिक्स लोग को आप देखते होंगे, वो नार्को शार्को सीरियल अब अच्छा मान रहे हैं, गुड फॉर देम। Who is can there be anybody in this room who didn't clap? आप बहुत छोटे होंगे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर ठोके उन्होंने, नहीं, I clap, मैं served them right man। वो टेररिज्म बाद में देखो आप, फर्स्ट टाइम द सिटाडेल वाज ब्रोकन, इट वाज नॉट पर्ल हार्बर, बहुत दूर है बेटा, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी ना, पर्ल हार्बर वाज क्वाइट फार अवे एंड इट वाज इमिनेंट, तैयारियां हो रही थी दोनों तरफ। All of a sudden the impregnable fortress of US of America was told that you are not impregnable, we can do that with you. The word started with that. So what my take here is, जो आप कह रही हैं, बात कह रही हैं, again दोबारा you have to look inwards, जिसको आप मैनेजरियल स्किल्स कहते हैं, उन स्किल्स के अंदर आपकी जो रोबस्ट स्किल्स हैं वो बहुत हद तक काम आती है। आप देखें किस सेक्टर में आपको ले रहे हैं, ये मत समझिए मेरे को पता नहीं है कि जो जॉब सेक्टर है, जो रिक्रूटमेंट है, उसकी कितनी बुरी हालत है, डोंट आई नो दैट। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारे साथ पे हमने बहुत गलतियां की होंगी, ऐसा नहीं कि मेरी गलती नहीं है, आप वो हैं जिनके कंधे अभी मजबूत हैं,
जोक। आपको देखना है कि आप इस देश को कहां लेके जाते हैं। कोई नहीं आपसे लीडरशिप मांगता, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड थिंग्स। यू आर फार बिहाइंड इन साइंस, यू आर फार बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी। कोविड का जो वैक्सीन है वो इंडिया में नहीं बना है बेटा, बाहर में है। वो जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑक्सफोर्ड में बना है, मेरी यूनिवर्सिटी का बंदा जी बाहर चला गया अभी, उसका फ्रेंड वहां डायरेक्टर था उसका, उसमें इंडियंस हैं, ये नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या लैब है? दूसरा जो वैक्सीन बना था, यू नो देयर आर इश्यूज एंड इश्यूज विद दैट वैक्सीन। WHO ने उसको वो वैक्सीन, और जिन्होंने लगाया उनके गाना दिक्कतें हुई हैं। आपको पता नहीं तो ये कहते पानी रख के let us not sort of criticize that। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अडाल पूना वाला, पता है आपको कि बड़ा तगड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, he invented money out of it। दूसरा फिनोमेना आपको पता है, जो डोलो पैरासिटामोल मिलती है चाइना से बेस सॉल्ट उठा के, उनके ऊपर शायद फाइन भी हुआ है कुछ। हर एक बंदा डोलो दे रहा है, आपको 500 चाहिए थी, वो 650 होती है पैरासिटामोल का डोज। ओके तो उसने भी खूब पैसे बनाए हैं। फार्मा इंडस्ट्री पता नहीं क्या किया। अभी थोड़े से केसेस हुए तो कहते तुम्हारा कर दो बंद, मास्क बेचो। अब जाके पता लगा भाई ये तो आम जैसा फ्लू है। मेरे को भी 2 बार हुआ बेटा, क्या फर्क पड़ गया? फिर थोड़े से अगर आप ठीक हैं माशाल्लाह, ऊपर वाले ने कहा थोड़ा और मरो यहाँ पे जिंदा रहो तो आपसे मिलने का देखो बात का मौका मिल गया, नहीं तो मेरी भी कोविड हो जाता है हिसाब किताब। तो आए तो मरना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? देयर आर ओनली 2 रियलिटीज इन दिस वर्ल्ड, एक आपकी बर्थ और एक आपका मरना, ठीक है? उसके बीच का जितना है उसमें या तो आप बिकमिंग हो सकते हैं कि कुछ बिकम हो जाइए, यू बिकम अ मैनेजर। आदमी सब है, एनिमल है, क्या आप इंसान बन सकते हैं? वो आपको देखना है, वो डिसीजन आपका है। मैं ये बता रहा हूं, मैं कन्फेस करता हूं, मैं बहुत शिद्दत से कोशिश करता हूं इंसान बनने की, बड़ी ठोकरें इसके ऊपर, कई जगह कॉम्प्रोमाइजेज है, तो बड़ी जगह नॉट अ सेंट, बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट एट लीस्ट टू डू सम गुड, टू थिंक अबाउट इट एट लीस्ट कि भाई बड़ी गलती हुई है, ये बहुत गलत है, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है ना जी? मैं भी बच्ची का बाप हूं, मैं देखता हूं, ओनली डॉक्टर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, दिल को दुखता है। और एक और रियलिटी आपको बता देता हूं, शायद वो कोई और डेटा नहीं देगा आपको, बच्चियों के लिए खास तौर पे। आपको सेमिनार महिलाओं पे कराना चाहिए, फैमिली से नहीं। जो ग्रॉस, जो जिसको प्रोडक्ट वैल्यू बोलते हैं आप, किसी भी काम की पूरे वर्ल्ड में अगर आप महिलाओं जितना काम करती हैं उसको कैलकुलेट करेंगे तो वह पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 5 टाइम्स है। कैन यू बिलीव दिस? एंड स्टिल दे आर नॉट पेड। वी आर सच कैलस लाइक दिस। हमें धिक्कार है। आप जितने मर्जी यूएनओ G20 बनाओ, झंडे लेके कोट पहन के सब गिलास पर खड़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार पे खाते हैं, खाना बड़ा गंदा होता है जी। मैं भी एक बार गया था तो कोई खिलाएगा तो क्यों नहीं खाए? साहब ने बोला खाना बड़ा अच्छा मिल जाए, अच्छा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली वेरी डर्टी फूड। अब बातें बोलो झगड़ा खाना मिल जाए, जरा थोड़ी सी डाल के तुम मटन खा लो, चलो होगा कढ़ाई के खाने ले जाते। बड़ी बात यह है कि इतने कैलस हैं हम लोग कि और बहुत से मुद्दे उठाएंगे, ये मुद्दा भी एक्सेप्ट नहीं करते कि पूरी जिंदगानी सदियों से एक महिला के कंधे के ऊपर डाल के हम कहते हैं नहीं वो कमजोर भी है, नहीं वो अबला है, वो तो देरी है, कर क्या रहे हमारी फूटा उसके लिए? किया क्या है आपने? ये बताएं मुझे आप। अभी तक इस पार्लियामेंट में हमने 50% तक रिजर्वेशन नहीं दी, जो कि तो कायनात में अलग या बनाई है। श्री कृष्ण जी, राम जी जो हमारे देव है, प्रभु है, मैं भी तो बहुत हिंदू हूँ, अलग है नाम लेने से कोई गुरेज नहीं है, बाबे नाम का नाम लेने से की गुरेज है? धर्म धर्म होता है, इंसान तो इंसान है, धर्म तो होते है। तो जी वो जगह 50% है उसका तो हकूक है वहां बैठना। ये आप कैसे कह रहे हैं जब डेमोक्रेसी इस तरह की है? एंड यू नो द कैपिटल, द एकेडमिक एंड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ अवर पार्लियामेंटेरियंस, इट इज गुड दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्ट ऑफ कोर्ट। मैं आप नेताओं को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बस एक को छोड़ के मोदी जी की लॉबी। ऑफ कोर्स आई लव हिम, ही इज अ ग्रेट लीडर। हाँ, मेरे को बीच में रोकने टाइम नहीं देगा, वैसे ऐसे में टाइम आता और बोलूं और ये सुनना चाह रहे हैं।
अबे थोड़ा तो मजा आ रहा है, पीछे वाले सरदार जी बैठे हैं, तू भी सुन ले। अबे वो पीछे सरदार जी तक नाम मैंने पूछा थी सामने कर्नल साहब ने, ना तो बताता तेन कोई शब्द नहीं होगा है, भूल गया। अब मैं याद दिलाना तेन, देश शिवावर मोए है शुभ कर्म तो कब न करो। हाँ जी, कितने शुभ कर्म करता काका, ये सोचा कभी निश्चय कर अपनी जीत करो। ए फौज में सारा हर जगह INA में, सब जगह INA में ये 300 होता है, सारे फौजी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उनका लिखा हुआ शब्द है, he was a poet philosopher। नानक बाबा की कहना जी, वंड शको, आपके पास अगर कुछ है बांट के खाएं। Vasudhaiva Kutumbakam can go to whatever nonsense. It is a intellectual threat to our own existence. संस्कृत में जो चीज होती है, मैं डर गया थी जब कर्नल साहब ने संस्कृत पढ़ी। नहीं, हमें सबको डर लगता है, संस्कृत नहीं आती ना, कनिष्ठ लैंग्वेज है, जैसे फारसी में होता है ज्ञानी दूर रहोगे इनसे। नहीं, अंग्रेजी में है कि चलो हमारा भाषा है, लेकिन संस्कृत वाले जो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो बाबा नानक ने बड़ी बात कही थी, वंश को अगर आपके पास है, जितना आप खाएंगे बांट के खाने से खुशी मिलती है ज्यादा। लंगर के कॉन्सेप्ट में भी यही होता है, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। इतने पिज्जे खा ले रहे, मम्मी बना के देती है सैंडविच एंड सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो, मे बी परोठा दे देती है, बोलती कोई वक्त नहीं है, गंदे में मैंने पिज्जा खा देता। तो उनके इकोनॉमिक मॉडल को स्ट्रेंथन करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन थिंग व्हिच वी कैन पार्टिसिपेट ऑल ऑफ अस। नाउ स्टॉप रीडिंग दैट। गुड थिंग इज, वो कहना जी आज सच जुगाड़ सच, नानक को सिया भी सच। अभी कहता नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धर्म बहुत चलता है आजकल, तो इनको धर्म भी पता होती है क्या। फंडामेंटल बिगिनिंग अच्छी है, तू सुन ले ना, ऊपर बात रखी हो तो सुन रहे शब्द कह रहे हैं। आप सच जुगाड़ सच, नानक को सिया भी सच। बाबा नानक कह रहा है आप सब भी सिख है, हम सब में वो शक्ति है। ठीक है बेटा, आप ही है जो सिखी है, सिख है वो मजलूम की रक्षा के लिए है। मैं एक बार डर गया, मेरी दादी ने बताया, ये जो गुरु साहब की तलवार है वो किसी को मारने के लिए नहीं होती, ये है सुरक्षा के लिए, जो कि मजलूम है, गरीब है। जो सिख होता है उसकी कृपाण और उसकी तलवार है, किसी कमजोर की रक्षा के लिए बाहर आती है, ये खालसा होता है। ठीक है, वो प्योर है अपने हार्ट में, जो दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने को खड़े हो। ठीक है, ये चीजें मैं तो गुरुद्वारे जाके तो सीखी नहीं है। इतना भुलेखा बना देते हैं, धर्म के नाम पे इतना कबाड़ा करते हैं। तो इसीलिए धर्म की बात छोटी सी की है आपके सामने। एंड इट इज अ ह्यूज रैकेट आल्सो, यू नो मोस्ट ऑफ यू। ये जो डेरे होते हैं, आसाराम जी रेपिस्ट, कितना पैसा कितनी लैंड इकट्ठी कर लेते हैं वो लोग, नहीं है जी। हमारे हिसाब से हमारी कंट्री अगर अध्यात्म को लेके चले, उसमें अपने आप वासुदेव कुटुंबकम है, क्योंकि हम वंड सकेंगे, सब मिलके खाएंगे, मिलके एक दूसरे का निवाला अपने हिस्से का देंगे, खुशी पाएंगे। वो अगर मिल जाए तो दुनिया जहान कबूल होनी चाहिए हम। ठीक है, तो मैं ये जो स्लोगन्स हैं आप इसको देखें, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट, इट इज ओके। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपन अराउंड यू, इजंट इट? बट यू आर द थिंकिंग माइंड्स, यू आर होमो फिलोसॉफिकस, वो इंसान जो सोच रखता है अपनी। ठीक है जी, होमो फिलोसॉफिकस है आप बड़े सोचें और ये देखें कि क्या चीज ठीक है, उसकी तय में जाके देखिए आप। और हमेशा ये याद रखें कि जो गरीब है, जो मजलूम है, Thank you panelists, thank you audience for the enthusiastic participation. On behalf of GIFT, we extend our heartfelt thanks to all our panelists for taking the time to visit our campus and interact with all students. We look forward to your visit again and we hope you had fun interacting with us. Now, I would request our director sir to present us to our director sir for his guidance, encouragement
word, sir. That's all.